Lifetime Achievement Award ceremony. I express my gratitude to Pandit Hariprasad Chaurasia ji, Shri Ghulam Mohammed Sheikh Sahab, and Kumudini Ben's daughter Maitri, who is among us today. May I call on stage Mr. Pranab Pani and Dr. Pushpesh Pant. Sir. Mr. Pranab Pani, over 20 years of corporate experience, his senior management roles working in several private companies, engaged in different businesses, including aviation, healthcare, etc. Dr. Pranab Pani is a passionate music lover who has helped legends of India over the years. Dr. Pushpesh Pant, who needs no introduction, an author, columnist, sometime teacher, passionate about food, films, music, painting and poetry, not necessarily on the same order. Dr. Pant has taught history and international relations and law at different universities for the past 6 decades. May I now request Panditji, Sheikh Sahab, Maitri ji, Dr. Pushpesh Pant and Anapai to come up and light the lamp on stage. But she's still working. I know. She's still working, but she can't travel. She can't travel. So she sends me. I'll call you. You call. Legends of India is a unique institution that brings together the living legends and those in the making. Legends of India strives to introduce the young to our traditional art forms that unravel the numerous possibilities which lie within the human spirit and enable them to visualize what lies beyond. Friends, we strongly believe that unless our traditional art forms are recognized and incorporated
within the education system, syllabi, they will shrink and become mere showpieces in the present socio-economic situation. Our endeavor has been to identify young talent and provide them a platform to share with the living legends. The crowning event of all our activities has been the Legends of India Lifetime Achievement Awards that was first conceptualized in 2002 and has since then gained national renown and appreciation from the cultural community. These awards were introduced to accord recognition to accomplished artists for their unrelenting contribution for preserving and promoting traditional art forms. It is our belief that artists give grace and meaning to life, and we are proud to honor such great personalities. By accepting the awards and gracing the award ceremonies, maestro like Habib Tanvir, Sitara Devi, Girija Devi, Paritosh Sen, Badal Sarkar, Krishan Khanna, to mention a few, have added immense value to this salutation. Our chairman of the awards committee has not been able to come, Dr. Lalit Mansingh ji, but he has a message for the awardees, the recipients today. I shall read out the same. To Legends of India, who will be honoring us with their presence at the ceremony today, I extend my warm salutations and my apologies for not being able to join them on this happy occasion. A message for for Pandit Hariprasad Chaurasia ji. Respected Hari Babu, I have grown up listening to your mesmerizing music and cherish the numerous occasions on which we have met in India and abroad over the last 6 decades. You are truly one of the brightest stars ever on the horizon of Indian classical music. You are very much in my thoughts these days as I sit under the blue sky and the greenery, a corner of Bhubaneswar so familiar to you. A word for Ghulam Mohammed Sheikh. Respected Sheikh Sahab, I have heard so much about you from my artist friends that I feel I know you closely. Being a painter, poet, professor, and intellectual is a challenging combination, but you have excelled in all these spheres. I am fascinated by your Mappa Mundi, where you explore the map of the mind and the universe, but eventually place India at the center of it. You are a guru to dozens of creative artists in India and abroad. Message for Kumudini ji. Respected Kumi Ben, you have revolutionized Kathak with your unique and innovative choreography and given it a new dimension. You have also rigorously trained several generations of Kathak performers who are following your distinguished path. Among the unforgettable memories from the decades of our past association, I recall your impressive presentation in the Great Hall of the Kremlin at the closing ceremony of Festival of India in the in the Soviet Union. Seated in the audience were the President of India and the President of USSR, along with other dignitaries. The whirling figures of Kathak and Uzbek dancers brought thundering applause as the grand festival was brought to an end. Before the presentation of awards, I would request Mr. Pranab Pani to say a few words. Mr. Pranab. You can say it from there also. सभी गुरुजनों को मेरी प्रणाम। आप सबको मेरी नमस्कार, अभिवादन।
ladies and gentlemen, it's an honor always when you get an opportunity of a lifetime, I suggest, I suppose, when you stand and be in front of the iconic personalities in front of whom you have grown all through your life, listening to their music, listening to their songs, watching their dances, what made India so proud. The legends, the living legends that we have, ladies and gentlemen, put your hands together and please have a warm welcome to all the living legends that we have, the great honor that India is having today. And ladies and gentlemen, it's perhaps, at least I haven't seen God yet, but I thought if I would like to see God and feel God, it is the artists, it's the musicians, it is these living legends who are sitting in front of us, who connect us directly to that soul, the great soul, who is the embodiment of love, peace, happiness, all blessing for all of us. And ladies and gentlemen, it's a music, and particularly if it is a classical music of any genre, if someone doesn't know that and would like to sing a song, it's like, in today's parlance, probably a T20 player trying to play a test cricket match. It's not a challenge for a classical singer or classical dancer to make an attempt of the so-called popular, the pop music or the dances that we have. I'm sure they can beat them hands down. But then this is what we need to understand. This is what the current generation, the millennials in particular from India, have to understand what India is all about. If you want to understand what India is all about, I think the heart and the soul of India resides with these talents, these artists, these great personalities who are created specially by the Almighty to get us connected to a world which could be named as heaven. I reckon if we have only music lovers, dancers, artists here, all innovative personalities, creative personalities, there won't be something called war in this world. I think it's time for the world to understand and respect the artists of every country, every nation, every continent, who always spread love through their art. I think the kind of society that we are in, the amount of hatredness, the intolerance that will disappear if we have artists only living in this world to make this world more beautiful. But ladies and gentlemen, at the same time, the problem is when you try to recognize a great opportunity for an organization like Legends of India, people like Dr. Lalit Mansingh, Mr. Dipayan Mazumdar have been working so hard, tirelessly, year after year, but struggling to even honor such beautiful talents, souls of the country. People here wouldn't mind doling out thousands and millions of rupees to probably construct a temple. But for the development of art and culture, we struggle to get even a single rupee. This is the world we are living in, ladies and gentlemen. I'm sure people like you, at least, who are gathered here, taking time off from a busy schedule on a Sunday evening, would like to take this message forward to your next generation, to your children, and say that if you want to live in a better world, in a beautiful world, please respect elders and respect the artists. India is embodiment of great civilization, and this is manifested only through the artists that we have.
the creative personalities, the beautiful minds, great souls, the beautiful people. And ladies and gentlemen, it's our responsibility to take this forward, and an organization like Legends of India needs to be applauded, needs to be supported for keeping the tradition, the rich tradition of India alive. In fact, you'll be happy to know that it's been decided to take it forward, to even spread across the country, to take it to different states in the country, and even different parts of the world. Let the whole world know and see the performance of our classical artists, singers, musicians, dancers, painters, and all that. And I'm sure this is something we could do it together. And together we can, if you want to resolve for a beautiful society, taking care of the environment, taking care of each other, shunning war and hatred, spreading the music of love. This is what a great honor, and my भूमिष्ठ प्रणाम आप सबको। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप आज आ सकें। आपके आशीर्वाद रहें और हम ऐसे ही आपके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, ladies and gentlemen, and please take good care of yourself. Namaskar. Thank you, Pranab. May I request Dr. Pushpesh Pant, who has been our advisor for more than 2 decades, to share his experience. I feel particularly blessed this evening. मगर मैं सच्ची बात आपसे कहूँ तो मुझे बहुत चीज़ें अपनी ज़िंदगी की याद आ रही हैं। मैं आज से 70 साल पहले एक छोटा बच्चा था, एक छोटे कस्बे में, नैनीताल ज़िले में, मुक्तेश्वर में, और कुमुदिनी जी तभी भी लेजेंड बन चुकी थी। तो हमको तब समझ में नहीं आता था कि लेजेंड लफ्ज़ का अर्थ क्या होता है। मगर मेरे पिता लखनऊ में पढ़े थे, कुछ उनका दूर दराज का वास्ता कथक नर्तकों के साथ रहा था। वो बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज का जिक्र करते रहते थे, और वो अक्सर कहते थे कथक का पर्याय अगर है तो कुमुदिनी जी हैं। थोड़ी समझ उसके बाद आई जब मैंने समझाने की कोशिश की कि भारत की कितनी नृत्य परंपराएं हैं और उसमें कुमुदिनी जी का क्या मौलिक महत्व है। ये वो शांति निकेतन की पढ़ी थी, और कई उनके सहपाठी शंकोदा, जय आपा स्वामी आदि थे, मामा के सहपाठी सतीश रे थे। तो घर पे कुछ ये जाने अनजाने कोचिंग होती रहती थी। मगर तब से मेरे दिमाग में ये बात थी, और आज मुझे लगा कि जब दीपायन ने बतलाया कि कुमुदिनी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ दिया जा रहा है, तो मैं लगभग दर्शन का उनका आकांक्षी यहाँ पहुँचा। और थोड़ी निराशा मुझे इस बात की रहेगी कि आई वुड हैव मिस्ड द दर्शन दिस इवनिंग हियर, बट आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट लेजेंड्स इज दैट देयर प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर विद यू। यहाँ आने के साथ मुझे अपना सौभाग्य लगा कि पंडित जी के पैर छूने का मौका मुझे मिला, कि पैर छूने के अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। धृष्टता होगी सूरज को दीपक दिखाना, बकवास करना, कि मतलब उनका जो कृतित्व है, उन्होंने जो बांसुरी में अपनी सांस फूंकी है, और वो लोग समझ सकते हैं कि बांसुरी का क्या महत्व हमारे कला में नहीं, मिथकों में, लोक जीवन में है कि कृष्ण की बंसी थी, मुरली थी, आप कुछ नाम दें, और उसके बाद जो सारी दुनिया नाचती थी उस धुन पर। पंडित जी का पराक्रम उससे कम है क्या? मतलब पंडित जी अगर कुमुदिनी जी पर्याय हैं कथक नृत्य का, तो पंडित जी पर्याय है बांसुरी का। गुलाम भाई के साथ रिश्ता थोड़ा व्यक्तिगत है, तो वो लेजेंड हैं, निश्चित रूप से लेजेंड हैं। मगर पहली बार जब मेरी इनकी मुलाकात हुई थी तो हम लोग हैवमोर में कुछ खा रहे थे, और हैवमोर में उतनी बड़ी पूरियाँ तब दिल्ली में नहीं मिलती थी। मुझे देख के लगा कि अगर रचना बसना है तो वो सूरत नु जमण काशी नु मरण अपनी जगह पर, हैवमोर बड़ौदा नु अच्छा खासा है। मगर उसके बाद ये हुआ कि तब ये वृश्चिक नामक पत्रिका का संपादन करते थे, थोड़ा बहुत गुजराती में बाँचता था, उसको पढ़ने की कोशिश मैंने की, और तब भी इनकी प्रतिष्ठा और साख एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो चुकी थी जिसको बहुत कुछ करना था, और बहुत कुछ कर चुके थे शायद तब भी। फिर ये फ्रांस चले गए, और उन दिनों जो मेरी मंगेतर हुआ करती थी ज्योत्सना सक्सेना, वो विवाह तो हम लोगों का कभी नहीं हुआ। वो चुटकुला ये था कि जिस लड़की का ब्याह न हो, पुष्पेश की मंगेतर बन जाए, उसकी शादी हो जाएगी, पुष्पेश कुंवारा रह जाएगा। तो ज्योत्सना जब गई तो वो मिसोदन में इनके साथ रही, नीलिमा जी के साथ रही, और निरंतर पत्राचार में जब तक हम लोगों का संबंध विच्छेद नहीं हुआ, गुलाम भाई का जिक्र होता था, इनकी चित्रकला का जिक्र होता था, नीलिमा जी का जिक्र होता था। और मुझे लगता है कि मेरे लिए आज की शाम इसलिए भी यादगार रही कि गुलाम भाई से मुलाकात
6 दशक बाद हुई और उनके चित्रों की प्रदर्शनी तो हर बार नहीं देख पाता हूँ, मगर जब भी कोई कवरेज होती है देखता ज़रूर हूँ। और मेरे आँख कान खोलने वाली गीता जी के दर्शन यहाँ हुए, गीता कपूर जी के, उनके साथ अनुराधा जी बैठी हुई हैं। उन्हें शिकायत के साथ में पूछा तुमने पहचाना नहीं, तो मैंने कहा देखिए दिक्कत ये है कि अब मैं वो 18 साल का लड़का नहीं हूँ जो सप्रू हाउस में पहले पहले आपसे मिला था, जिसने आपकी पुस्तक फॉर इंडियन मास्टर्स वाली किताब पढ़कर पेंटिंग के बारे में कुछ सीखने की कोशिश की थी। अनुराधा जी तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थी, हम लोग कैंटीन की बातें कर रहे थे। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वर्षा जी यहाँ हैं और इनके साथ भी एक आत्मीय संबंध रहा है, राजीव यहाँ बैठे हैं, जो राजीव शायद समझते हैं दुख सबसे ज़्यादा दीपायन का, कि कला अपनी जगह पर ठीक है, संस्कृति अपनी जगह पर ठीक है, मगर भूखे भजन भी नहीं होता और कुछ न कुछ तो रकम चाहिए। तो जिस तरह से ये एक लोनली फरो करते रहते हैं, मुझे लगता है दीपायन से मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि दीपायन छात्र भी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि इस संस्था के आप पैटर्न भी होंगे, तो मुझे बड़ा संकोच हुआ कि पैटर्न होने की न कोई मेरी लियाकत है न वो है, मगर मुझे लगा कि ये काम जिस तरह का करते हैं, बहुत विस्तार से इन्होंने कहा, मुझे लगता है हम लोगों की जितनी जो सामर्थ्य है वो तो हमें सपोर्ट करना ही चाहिए, मगर हमें अपने मित्रों को ये भी समझाना चाहिए कि संस्था के पास ATG भी है, 12A भी है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्ट भी है। तो यदि आप वो 1 लाख दोगे तो 50,000 तो आपकी जेब में चला ही जाएगा, उससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो, और कला का संरक्षण भी हो जाएगा। मेरे ख्याल में अशोक भाई बैठे हैं उस तरफ, हाँ, तो अशोक भाई तो सिद्धार्थ मतलब रज़ा फाउंडेशन बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ करती है। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी कला संस्कृति के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है, मगर मुझे लगता है कि कुछ मजबूरियां हैं, मतलब और भी कुछ मर्ज होते हैं, और भी कुछ राहतें होती हैं वसल की राहत के सिवा, और कला की प्राथमिकता बहुत नीचे आती है। मेरे ख्याल में अशोक जी अकेले आदमी हैं जिनके लिए कला की और एस्थेटिक्स की जो प्राथमिकता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा रही है, और गालियाँ भी उन्होंने खाई हैं। हाल ही में मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ यदि और कुछ मित्रों को मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, मगर मुझे लगा कि आज की शाम इस बात का प्रमाण है कि हम अभी मुर्दा पूरी तरह से नहीं हुए हैं, और जो लेजेंड्स हैं वो लिविंग लेजेंड्स कई मायने में होती हैं, वो लिविंग लेजेंड्स होती हैं और वो हमेशा रहती हैं, अक्षर रहती हैं, उनकी यशा काया तो रहती रहती है। हम आशा ये करते हैं कि जो लोग आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे और अभी चिरकाल तक रहेंगे। धन्यवाद। Thank you, Pushpesh ji. May I now request you to present the Legends of India Lifetime Achievement Award for music conferred upon Pandit Hariprasad Chaurasia ji. I request Pandit ji to come up on stage.
Check. Hello. नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है और अवार्ड पाके और पैसे पाके, इतने पैसे दे दिए मैं कभी देखा भी नहीं सच कह रहा हूँ। मैं ये सोच के नहीं आया था कि पैसे मिलेंगे मुझे, इतना बड़ा ऑनर, उसके बाद पैसे, बहुत अच्छी बात। और बड़ी खुशी होती है कि ऐसे हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। जैसे हमारे आपने जैसा कहा कि कला को किस तरीके से हमको देखना चाहिए। हम देखते हैं दूसरी चीज़ें, कान यूज़ करते हैं कला के लिए, अपना कान, और जब कला अच्छी लगती है तो वही सुनते रहते, उसी का आनंद उठाते हैं, और जब उसका आनंद उठाते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो देख के लगता है कि आगे क्या होगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मेरे दिल में है, और आप लोगों से ही कहूँगा क्योंकि आपने हमको जगा दिया। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम लोगों को कौन इंट्रोड्यूस करता है? एक तो इतनी बड़ी संस्था है AIR, रेडियो, दूरदर्शन, ये सब संस्थाएं हमको पब्लिक के सामने में खड़ा कर, छोटा था बच्चों के प्रोग्राम, ये लोग आए आगे कर दिए। तो हमारे माता पिता ने हमको धक्का नहीं दिया कि चलो भाई जाकर सुनाओ, और उन लोगों ने इतना प्यार से हमको प्रेजेंट किया। जहाँ भी गया, दूरदर्शन, आकाशवाणी, मुझे जॉब दिया, मैंने नौकरी किया कई सालों, बहुत कुछ सीखा, बुजुर्गों से भी सीखा और वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी सीखा। अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि रेडियो आस्ते आस्ते बंद किया जा रहा है। मालूम नहीं क्यों। अगर रेडियो बंद हो गया तो अब आने वाली पीढ़ी को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, किसको बोले, कौन होगा सुनने वाला? ये क्यों बंद किया जा रहा है? फिर क्या कोई बुराई है? सुबह से बच्चे बिस्मिल्लाह खान साहब की सहनाई सुनते थे, भजन सुनते थे, क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे। अब इतना बुरा लगने लगा, उसको बंद करके खाली हम अपनी बात कहें, उसकी बात सुने, क्या है? समझ में नहीं आया। तो अगर ये हो जाए, आप लोग दिल्ली में इतने महान लोग हैं, इसको करने से हमारे बच्चे अच्छी तरीके से जिएंगे, अच्छा म्यूजिक करेंगे, पूरे संसार में लाभ करेंगे। इससे और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा ये जगह है, आज मैं दिल की बात बोल लूँ, कोई क्या कोई सज़ा देगा मुझे इसकी? थैंक यू। हरि जी के बारे में और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सब उनको जानते हैं और हमने उनकी बातें सुनी। मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर पंत को लेजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर फाइन आर्ट्स टू गुलाम मोहम्मद शेख साहब to come up on stage. Sheikh Sahab, in pursuit of knowledge and creativity that has taken his career to national and international prominence, he has cultivated lifelong relationships with diverse artistic and philosophical traditions across Asian and European cultures. Based in meticulous research and substantial fieldwork, his profound knowledge of aspects of Italian, Persian, Chinese, Turkish traditions is his widely study of Indian painting traditions. Embracing a wide range of ancient murals of Ajanta to contemporary work of Pattachitrikar, Sheikh Sahab's scholarship has been enriched by deep immersion in Rajasthani, Mughal, and Pahari miniatures paintings traditions. Sheikh Sahab's commitment to diversity in Indian tradition has led to an immersion in Bhakti and Sufi poetry and philosophy. In fact,
of a climate of intolerance and strife in India and internationally, Sheikh Sahab's art and his scholarship stand for a unique genius of Indian tradition in hospitality, accommodating a diverse of creative impulses. I request Sheikh Sahib to come up on stage. The plaque reads as such: Padma Bhushan Ghulam Mohammed Sheikh, an internationally renowned writer, critic, and artist celebrated for his lush, richly narrative paintings. Sheikh Sahib draws his inspiration from Persian, Mughal, and Pahadi miniatures, besides Bhakti and Sufi poetry. This, combined with an interest in European Renaissance art, Ghulam Mohammed Sheikh is doing human service for the preservation and propagation of Indian artistic forms. We salute a true legends of India. उसको पहन के भी नहीं चल सकते, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। आइए, say a few words. I feel humbled for my first response is that, this comes after, what shall I say, a life lived in art. I have lived right from my early days in Kathiawad to Baroda and elsewhere with artist friends, and while teaching with my student friends for almost 30 years. And I have been in the company of the best of writers, best of poets. I can literally name, some of them are still around, some of them have gone. I've been in the company of the best art critics. Some of them are sitting here. One of them is here, Geeta Kapoor. I've had the best of company in my life, and Nilima is here. But there are so many others who have contributed to who I am today. I don't think I could have done it on my own. I did it because all these people came into my life, and it is a matter of great pleasure, and also I feel honored that they have been part of my life. Here is somebody whom I value greatly, like Iraben, not only just wife of my guru, but also a great ceramist in her own right. But there are so many others, poets and writers, etc., etc. So हमारी जिंदगी का कोई पिंड होता है क्या सचमुच? अगर वो होता है तो कैसे बनता है? तो ये पिंड में इन लोगों
ने कुछ न कुछ डाला है, हमेशा कहीं न कहीं से लेकर। तो मेरा जो बना हुआ ये पिंड है, मतलब मेरा शरीर, मेरे शरीर के अलावा मेरा जो पूरा जो जहन है, उसमें इन सभियों ने जो भर भर के दिया है, और उसके कारण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उसी के कारण जो कुछ भी मैंने किया है, मैंने जो सीखा है वो भी यही है कि हमेशा कुछ ढूंढते रहना, हमेशा सोचते रहना, हमेशा सवाल करते रहना, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना। ये तो ज़िंदगी का अगर कोई ध्येय है तो ये भी मैंने इन्हीं से सीखा है, क्योंकि ये सभी लोग कुछ न कुछ करते रहे मेरे सामने। इसलिए जब कभी भी मैं अपने स्टूडियो में जाता हूँ तो मेरे सामने ये खड़े हुए होते हैं, और जब मैं स्टूडियो से निकल के आता हूँ तो वो मेरे पीछे आते हैं। तो इन लोगों ने ही तो मेरे जहन को मतलब एक तरह से संभाला है और दूसरी ओर से संवारा है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को भी श्रेय देना चाहूँ तो वो है मेरे विद्यार्थी। मेरे विद्यार्थियों ने मुझे इतना दिया है, मतलब उनसे मैं उतना सीखा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सवाल पूछे उसके जवाब देने के लिए मुझे जो मेहनत करनी पड़ी उससे मैं सीखा हूँ। और उन लोगों ने भी जो अपने जीवन में पाया है, किया है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे अपने दोस्तों से भी बहुत सीखा है, लेकिन मेरे विद्यार्थियों का श्रेय मैं आज जाहिर में सबके सामने ये जाहिर करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे that's very kind of you. This foundation, Mr. Mazumdar, has been very kind, and Mr. Lalit Mansingh I have known somewhat, but not everybody. But so, thank you very much. Thank you, Sheikh Sahab, for your kind words and inspiring words. May I now request Mr. Pant to give away the award for dance, Srimati Kumudini Lakhia. But since she has not been here, her daughter Maitri has been so kind to be with us. So may I request Maitri to come up on stage. About Kumudini Ben, more than 70 years in the field of dance, Mrs. Lakhia has created the much-deserved respects for dance in the Indian society. She established Goutam Center of Dance in 1964, which is now a nationally and internationally known institute of Kathak dance. Besides creating highly skilled professional dancers, it is known for innovative and path-breaking creations in dance choreography. Goutam Center has been invited by the Government of India to perform in the festivals of Sweden, UK, USSR, and many other countries. Thank you, Maitriji, for joining us and accepting the award on behalf of your mother. Thank you. Thank you, Dipayan ji. During this journey of Legends of India, there have been many, many friends who have helped us, who have been part since inception. May I request Sheikh Sahab to come up on stage and present our
token of appreciation for Prabal Ghoshal. Prabal, you're there? Chairman of the Cygnus Healthcare Services. He is heading the fastest growing unique healthcare business in India. Prabal has been at the forefront of path-breaking innovations. He has led strategic shifts in companies across diverse sectors, telecom, media, entertainment, infrastructure, and now healthcare. Mr. Ghoshal reshaped numerous organizations through turnaround strategies, corporate restructuring, fundraising, and public duty. Mr. Ghoshal has helped Legends of India from the formative stages with his unrelenting contribution. I request Mr. Prabal Ghoshal to come up on stage and accept the token of appreciation. I now humbly request Dr. Varsha Das to come up on stage and accept our token of appreciation. Dr. Varsha Das, former Director, National Book Trust and National Gandhi Museum, and an art critic. Dr. Das is responsible for creating Legends of India. Creating Legends of India as an organization. She has been the guiding force behind Legends of India for the past 2 decades. She has been a curator for Legends of India Fine Arts Exhibition. Thank you. May I request Dr. Das to say a few words? She has been associated with us from the very beginning. As I said, she has helped us form the organization. Thank you very much, first of all, for reconnecting, actually in between. Well, it all happened on the flight. And Mr. Mazumdar happened to sit next to me, and I was reading a book, and he said that my wife also reads this book. And that's how the conversation began, and then he spoke about Legend of India and how they decide on the people whom they would like to honor. And I made a few suggestions, and our connection continued, and the legends came in, and Mr. Mazumdar also kept flourishing and honoring so many wonderful people. I'm very, very happy to have been associated right from the beginning. And Day one. At one point he said, "You are the mother of Legends of India." So, but anyways, I'm very, very happy that we get an opportunity to meet so many artists, listen to them, and remain connected for peace and happiness in this world. Thank you so much. Finally, I would like to take this opportunity to thank and express my gratitude for the Selection Committee of Legends of India Lifetime Achievement Award chaired by Shri Lalit Mansingh ji for helping us with a team of eminent personalities select recipients unanimously. We thank Srimati Rashmi Malik, Srimati Laila Tabji, our patrons Shri Suresh Goyal, Shri Siddharth Tagore, and Srimati Mrinalini Mehta for being on the panel of the selection committee. I, on behalf of Legends of India, specially thank Mr. Siddharth Mohanty, Chairman of Life Insurance Company, Corporation of India,
Mr. Mohanty, a connoisseur of Indian art forms, has taken the initiative and personal interest in ensuring the success of this award ceremony this evening. I would also thank Mr. Sudhakar Gande, though he has not been able to come this evening, for helping us since inception. And I thank the Hope Foundation for supporting us from the very beginning. We are grateful to Pandit Nityanand Haldipurji for giving his consent to perform this evening and mesmerize us. It is now time to celebrate, friends, and with the recital of Pandit Nityanand Haldipurji. I request him to come up on stage. Most of you know Panditji. Nityanand Haldipur ranked among India's leading flautist and a senior disciple of the reclusive genius. Pandit Padma Bhushan Srimati Annapurna Devi, the doyen of Senior Mahir Gharana and daughter of legendary Ustad Alauddin Khan Sahab. Srimati Annapurna Devi accepted him as one of her disciples, that Nityanand's talent and musicianship truly flowered it. It progressively acquired depth, maturity, and a new dimension. His first guru who initiated him into the art, technique, and aesthetics of flute playing was his father, the late Shri Niranjan Haldipur, a senior disciple of the renowned flute maestro, late Pandit Pannalal Ghosh. The warm, soothing sounds of the bamboo flute were an early pervading influence. Today, I think, will also be a great day because Panditji will be playing before the legend of Basuri.
ओके, नमस्कार। मैं राग बिहाग से शुरुआत कर रहा हूँ। विलंबित गत एक ताल में रहेगी, द्रुत गत 3 ताल में रहेगा।
एक 5 मिनट्स एक धुन बजाता हूँ.
Thank you, Nitananji. Thank you, Vinod Lele, who has been with us, helping Sangat de rahe hain Pandit ji ka. And before we break for dinner, I have, when people are too near to you, tend to forget that. I forgot to congratulate and honor Mr. Pranab Pani. May I request Mr. Pranab Pani, ऊपर आने की जरूरत नहीं चाहिए. And I would request Mr. Ashok Vajpayee to give away this token of appreciation. Thank you all. Thank you for being with us today. And now I think we can break for informal chit-chat over dinner. Thank you. Let's all join in for dinner.